الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل هو الله أحد. Say, He is Allah, who is one. الله الصمد. Allah, the eternal refuge. لم يلد ولم يولد. He neither begets nor is born. ولم يكن له كفوا أحد. Nor is there to him any equivalent. Assalamu alaikum and very good evening everyone. This is me Zaryab Rajput, your host of the day. I welcome to all of you. आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली कौमी तराने के एहतराम में अपने नशिस्तों से खड़े हो जाइए. शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज की इस खूबसूरत तकरीब में शिरकत इख्तियार करने के लिए, क्योंकि जहाँ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इकॉनमी को लेके खासे कुछ मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, वहीं पर जो हमारी मोबाइल इंडस्ट्री है उसमें होने वाली कामयाबियाँ, उसमें आगे चलकर आगे बढ़कर ली जाने वाली पॉलिसियाँ, इस सिलसिले में आज आप सबको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है ताकि पाकिस्तान आने वाले दिनों में न सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सके, बल्कि हम इस बात का अहद कर सकें कि जिन पॉलिसीज़ को इख्तियार करते हुए हम पाकिस्तान की इकॉनमी पॉलिसी को जो है वो गाइडलाइंस देना चाहते हैं, पाकिस्तान उसमें भी भरपूर ताउन किरदार अदा कर सके. मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान में इसका एक बहुत बड़ा रोल है. और अगर देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ग्लोबली भी अगर किसी सेक्टर को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है तो पहले 5 बड़े सेक्टर्स में मोबाइल इंडस्ट्री भी शामिल है. ओवरऑल पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पर आप सभी की जेब में, किसी के टेबल पर, किसी के सोफ़ा पर तो किसी के बैग में दर्जनों किस्म की, दर्जनों कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन्स शामिल होंगे, पास पड़े होंगे, रखे होंगे. लेकिन अलमिया ये है कि हम यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं. पाकिस्तान में इस वक्त उन सैकड़ों की तादाद में इस्तेमाल होने वाले जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो इम्पोर्ट किए जा रहे हैं. बहरहाल बहरकैफ आज के इस मामले पर रोशनी डालने के लिए, मैं इस तकरीब के बारे में बाकायदा तौर पर आगाह करने के लिए और आगे चलकर क्या कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के इश्तराक से, उस पर हम बात करेंगे. वेलकम नोट के लिए मैं दावत देना चाहूँगी वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जनाब मुजफ्फर पराचा साहब को. प्लीज़ कम ऑन स्टेज. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and Honorable Minister, Mr. Makhdoom Murtaza Mahmood Saab, Mr. and Secretary Production Industries, Mr. Imdad Bosal Saab, Mr. Nabil Hashmi Saab, and CEO EDB, Mr. Raza Abbas Saab, and General Manager Policy Engineering Development Board, Asim Saab, and all the dignitaries who are here from PTA, from other walks of life, everybody warm welcome. And today, on behalf of Pakistan Manufacturers Association, I am the senior vice chairman of the association, and I just want to introduce you what we have done and what we are looking forward and how we can do the participation in the growth of our country and how we can overcome the trade deficit for the country. So first of all, I just give you a little brief as a warm welcome to all of you. Pakistan Mobile Manufacturers Association played a vital role after the policy came by the government of Pakistan in 2020 in the production industry of mobile. And just in 2 years time span, today you will be astonished to see 95% of mobile phone used in Pakistan are locally manufactured phone. We cater 95% of the local industry. And not only this, all the big brands, the global top 7 brands, Xiaomi, Samsung, Vivo, Oppo, all the brands, even those whose name I haven't taken, it's a long list, are here in Pakistan. Please forgive me for those brands I haven't taken the name. But all the brands except iPhone, they are now being made in Pakistan because of the policies of government of Pakistan. And not only this, the most important thing in this era is the
jobs. We have created more than 40,000 jobs in this industry. And not 40,000 jobs, the industry related to this has created more than 150,000 jobs in the country, because at least 20,000 retailers are linked with this business. And every retailer, if I have 5 people, so this means 120,000 or 150,000 people are associated with this industry. So in all together, this industry is creating more than 200,000 jobs right away. And every day we talk about deficit of Pakistan. This is the industry, this is the hero industry, which can really bring Pakistan out of deficit. I just give you an example of Vietnam, where we have mobile exports more than 60 billion US dollars per annum. And Pakistan, just in 2 years, is able to cater 95% of the local demand. So I believe this is the industry which is now looking towards export, which is now looking towards bring the foreign exchange to Pakistan, earn foreign exchange for this country. And I request to all you stakeholders and to all those manufacturing partners, there are 31 manufacturing partners, starting from local brands and going to international brands. We need all the government, from the government, all the associations, engineering development board, from everyone. We need special support for the local brands as well, who are 100% made in Pakistan and who are looking for the exports to all the European and Middle Eastern countries in the world. So please, we need your support and we need your presence. We need that we all walk hand to hand, and we bring this country to a level where our neighboring countries like India started mobile phone production, Bangladesh started, people are eyeing towards Vietnam, and especially the China. After CPAC corridor, the China has $140 billion exports. If we get 10% of it, trust me, Minister Saab, we can get $14 billion exports or $15 billion exports in 3 years' time. So we need your real support to cater this industry. And this is all from the association side, and especially from the EDB side. They supported us like anything under the leadership of your ministry and under the leadership of your secretaries as well. So they all supported us. So the motive is we need to grow. We need to grow this industry, and we need more localization. The allied industry, like making the parts, making the chargers, making the mics, all those things. We need to create an ecosystem, and for this we need your support. From my association side, our chairman Abdur Rahman Saab, he worked a lot in this cause. Mr. Amir Allahwala, Mr. Zishan Mianur, they all worked a lot. And today, especially for you, Mr. Amir Allah worked hard, and he made a complete presentation to show you what the country is going on and what we really need. And hope you will really stand with us and we make this country grow all together. Thank you, everyone. Thank you from all my fellow colleagues, from all my fellow industries, those who are from local mobile phone industry, those from international partners. Thank you very much for being here. Thank you very much for your all support. Thank you, so kind of you. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच सर फॉर योर गुड वर्ड्स। और ये कहना इसलिए भी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, मिनिस्टर साहब आपकी थोड़ी सी तवज्जो दरकार है मुझे यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, और ऐसे में हम देखते हैं कि हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, लेकिन जो एक प्रॉब्लम का फैक्टर आता है वो एक बिजनेस कम्युनिटी की तरफ आता है, क्योंकि उसके लिए पॉलिसीज़ मैटर करती हैं। उन पॉलिसीज़ का उनकी जो कंटिन्यूटी है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, वो मैटर करती है। आज भी हम देख रहे हैं यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले भी परेशान हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाले भी परेशान हैं, लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंपोर्ट को कम करना है और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो इसी सिलसिले में मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या हो सकती है, इस पर हम आगे चलकर कैसे काम कर सकते हैं, जनरल मैनेजर पॉलिसी EDB जनाब आसिम अयाज साहब आपसे दरख्वास्त करूँगी, काइंडली आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए। Honorable Chief Guest,
Minister for Industries and Production, Makhdoom Murtaza Mahmood Sahab, Secretary Industries, honorable dignitaries. This is the flagship project of Engineering Development Board, the mobile phone manufacturing policy which was prepared in 2020. Before that, the market was unregulated, and thanks to PTA, who did a lot of work in regulating the market, but unfortunately, by only doves, the imports could not be managed. There were only 1,000 kits imported through the formal channel, and there was a lot of gray market in Pakistan. So you can see that the imports in 2018 were 12.7 million, whereas the local manufacturing was 5.2 million, and out of those, only 1,000 kits were imported formally. Ministry of Industries and Production started the stakeholder consultation involving PTA, MOIT and Telecom, National Tariff Commission, NTC, Ministry of Commerce, Board of Investment, and the industry, of course. The international trends were studied under the guidance of the Board of Management of Engineering Development Board, and we studied the Bangladesh, Indonesian, and the Indian model, and the mobile policy, the summary was moved by Ministry of Industries and approved by the Cabinet, and the results after that, the policy formulation. Now you can see this, that the local manufacturing this year, the last year, it was 19.7 million against 1.37 million imports. Almost all the brands also to bring them into Pakistan, and I will request the Minister for Industries to give them the policy they want to come to Pakistan, because that will create a lot of employment opportunities. So the latest technology also improved. We started moving to 3G or 4G from the non-Android phones. This year, the last year, the production went down because of the import restrictions, but overall, this industry have thrived a lot. This has now 194 subscribers. We have annual demand of around 40 million telephones. The employment, Pracha Sahab has already told, 40,000 plus direct jobs. Investment is 200 million plus. The export of mobile phone has taken place. Recently, we want to increase the number, and today in the second half, we'll be discussing how to do that. The localization, already we have written to the Ministry of Industries. We'll be taking up with FBR. The localization of packing material. The packing material industry is already there in Pakistan. Around 2.6 billion rupees will be localized. The business will be transferred to the local industry. The economic slowdown, as I've already said, has hampered the growth. But what is the way forward? We are looking forward for ease of doing business. For this, in the later half, we'll sit together, join hands with the association, and we'll find out the ways how can we do better. In the localization, parts and components, and allied equipment, as well as accessories of the mobiles, many of our partners, our stakeholders have already started doing that, and we'll be working at export development. If India can, if Vietnam can, we can compare their policies. We can also export because we have almost all the global brands here. And in the last, we are here, Ministry of Industries, Engineering Development Board will work together for promotion of this industry, jointly with the stakeholders consultation. As I said, this was our flagship project in addition to automotive sector. EDB has done well, and you should hope that we'll do well, and we request the government, we'll be the spokesperson or the organization for the association to put your word forward to the government of Pakistan. Thank you very much. इस वक्त मजमूई तौर पर 31 मोबाइल फ़ोन कंपनियां यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं।
I think we all deserve a big round of applause for this effort by the industry and the government. Acha ji, let me try and explain a few things about the industry. So this is the Pakistan Mobile Phone Manufacturers Association. It's a group of 31 companies which comprise global brands as well as local brands. And we are manufacturing 95% of all mobile phones that are sold in Pakistan, alhamdulillah. What is our future vision? Next slide कीजिएगा भी. चल नहीं रही. Okay. Minister Sahab, this is something that I want to especially say to the government. Sometimes we don't understand our power as a country, as a market, as a domestic economy, as a large number of people, which is the 5th largest population on the planet. I've made a comparison of 4 countries, Pakistan, Malaysia, Vietnam, and South Korea. And if you were to look at the area, Pakistan, as compared to these 3 other countries, is the biggest by far. I mean, if Pakistan is at 100% in terms of land mass, Malaysia is only 41%, Vietnam is 1/5 of our size, and South Korea is about 1/10 of our size. And if you were to look at the population, with 225 million people, comparing with Malaysia, they're only 14% of the size of our population. Vietnam is 43% of the size of our population, and South Korea is merely 23% of the size of our population. Now, this is the power that we do not realize, really. I mean, this is a treasure that we have, a big population which drives a big demand, and a very young population at the same time. If you were to look at the per capita income, sir, at $5,748 on a PPP basis, Malaysia is at 28,000, Vietnam is at 11,000. I mean, and we look at Korea, it's 47,000. So I mean, the countries that are focusing on technology, all of these 3 countries, I mean, Malaysia started to bring Matsushita, Panasonic, Sony, Sharp, JVC, all these plants into Malaysia in the 1990s and the 2000s. And this is what the countries that focus on technology, same happened with Vietnam and same with South Korea. Their GDP goes up, the demand goes up, and the opportunities go up. And if you were to see the population age bracket, 60% of our population is young, between 15 and 64. This is a big, big asset. We should try to leverage our domestic market to make global manufacturers come to Pakistan and then export from Pakistan. So what is mobile phones? Is it a game changer for Pakistan? Most definitely, it is a game changer, inshallah. It is a sunrise industry. Now, what is a sunrise industry? We talk about sunset clauses and sunset scenarios. But this is a sunrise industry, and according to Google, it's a new and growing industry, especially in electronics or telecommunication. So in Pakistan, when we start an industry, we are always asking, why are we not starting from designing or basic raw material? This is not how any industry in any developing country develops. This is how you develop. You develop the reverse. So until the year 2020, Pakistan was here. We were just importing and consuming the final product in terms of mobile phones. Then we moved to the next step, which other countries did before us, China, India, Vietnam, and then Pakistan joined this in 2021. After the policy, we started to assemble the final product. And now we have to, in this year, we will start doing the raw materials and components. So we are just entering this phase. And I think next 4 years, from 2023 until 2026, we would be in this phase of developing components and then later raw materials. And then we will go into the designing, the product design, the customizations, the IT side of it, the software side of it. So this is the logical progression. So I was talking to someone and he was saying, यार आप लोग microprocessor क्यों नहीं बनाते हो? आप IC कब बनाओगे? भाई हम IC कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें अपनी जो position है global technology food chain में वो पता होनी चाहिए. This is what we want. We should be. We should be aiming to become the best assembler in the whole goddamn world. We are the best assembler, most efficient, best ecosystem. Okay, so let me just identify what is the landscape scenario. We have 40,000 skilled and semi-skilled jobs. These have been generated only in the past 2 years. We have 31 manufacturing plants across Pakistan. We've got production of about 3 million units every month. Half of these are feature phones and half of these are smartphones. Of course, this is before this current economic
situation hit us. And almost all global brands, sir, are made in Pakistan, with 93 or 95% demand of the domestic market being met by local plants, and now we are preparing to become a global assembling hub. Now, this is an opportunity which it depends on us whether we capitalize on this opportunity or not. It might happen कि 10 साल बाद पता चले यार एक इंडस्ट्री थी वो आज भी assembling ही कर रही है. ऐसी हैं industries बहुत सारी जो आज भी वैसे ही चल रही हैं. Can we make a difference? I think we can, because the breed of people who are working in this industry are very dynamic. They are hungry for business, they are very competitive, and they just need a certain push from the government. A little bit of hand holding will do the job. भाई फिर नहीं चल रही. Okay. So, so if we were to look at in terms of landscape, I mean, you can see all of these brands, they are made in Pakistan. They contain global brands, they contain local brands, but these are the companies that are your soldiers, the feet on the battlefield. So, अगर आप हमें मजबूत करेंगे, तो मेरा ख्याल है जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस इंडस्ट्री को ट्रस्ट नहीं करेगी, अगर सोच ये होगी कि यार ये तो, सॉरी टू यूज द वर्ड, चोर हैं सब, या ये कि टैक्स बेनिफिट्स चाहते हैं, या ये कि यू नो दे आर नॉट रियली सीरियस, तो मेरा ख्याल है फिर बात जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी. सो लेट अस वर्क टुगेदर लाइक इट हैज हैपेंड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो दीज आर द ग्लोबल ब्रांड्स मेड इन पाकिस्तान. नाउ आई थिंक वी शुड बी फीलिंग प्राउड that in just a small period of 2 years, we have Samsung being made in Pakistan, Xiaomi, Nokia, then the Chinese Infinix, Oppo, Vivo, Tecno, ZTE, Realme, Redmi, Itel. Now, all of these are now being made in Pakistan. And you saw the video, there is a genuine manufacturing industry. It's not just for table pe baith ke koi assembly nahi ho rahi. It's a genuine manufacturing industry. And by the way, it is very complex process to manufacture or assemble a mobile phone as well. So this means with these global brands present here, the global value chain is accessible. And mobile phones can really become Pakistan's champion industry. There's a realistic possibility today in 2023, we can say that we are poised to become a champion industry. Depends on the industry and the government and how we work together as a team to make it happen, inshallah. Now there are, of course, दुनिया में आप reinvent भी कर सकते हैं wheel, या फिर आप सीख भी सकते हैं ना. इंसानों में खास बात ये है कि चूंटियों की तरह हम दोबारा से वहीं से शुरू नहीं करते. We pick, learn from others, and we try to emulate the good examples. So what are the good examples in the mobile phone manufacturing sector? 2 examples, sir. Vietnam and India. वियतनाम ने हाथ पैर जोड़ के सैमसंग का प्लांट लगवाया 2014 में. They gave them a 30-year tax exemption. They gave them land, subsidized. They gave them any policy that Samsung wanted. And Samsung started with, you know, with a zero level in 2014. And today, the export of mobile phones from Vietnam is almost 57.5 billion US dollars every year. And all of it is Samsung. अब उसके बाद फिर और कंपनीज भी वहाँ जाना शुरू हो गई. Secondly, then India is now focusing on the mobile phone sector, and now their exports are doubling. Every year they're doubling. And their target is very simple. $125 billion in exports over the next 5 years. So what do they want to do actually? It's very clear, sir. They want to replace China as the mobile phone manufacturer of the world. This is what they want to do. They are targeting, they started just in 2017. They first started in 2014, then the industry flopped, then they again started in 2017, 2018. Now, of course, if we just keep on assembling, we will never have a competitive advantage. So what do we have to do? We have to manufacture locally. So I was sitting yesterday with some of my friends in Papam, the auto parts manufacturers, and I was talking about these things. Yaar, ye local karni hai. And they jumped up on the volume. They said, kitni quantity? Hum to 3,000, 5,000 gadiyon per month ke hisab se chalte hain. I said, the quantity is about 3 million per month. And Mehdi just jumped up and he said, yeah, I want to set up a plant for these plastic parts. This is a plastic part. It's so simple for the auto sector. We make bumpers and dashboards and steering wheels and all of these parts. So people are ready to invest. It's just that we have to give them the right cascading tariff, जो कि EDB का और FBR का काम है, and we have to give them a hope that there will be stability in policy. So these are all the parts, you know, what we need. The requisites क्या हैं, sir? Consistency of government policy. ये critical है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही है.
We need country stability to attract global players to invest in the parts industry. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो फेलियर है वो असेंबलर्स का फेलियर नहीं है, वो फेलियर हम सब का है कि हम ऑटोमोबाइल ग्लोबल ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को पाकिस्तान में नहीं लाए जिस तरह वो थाईलैंड और दूसरे मुल्कों में गए. सो आई थिंक यहाँ हम ये गलती नहीं करेंगे. एंड द चाइनीज कंपनीज स्पेशली आर ऑलरेडी रेडी टू कम इन लोकल जॉइंट वेंचर्स फॉर लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग. वी नीड अ कैस्केडिंग टैरिफ, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि भाई एक सर्टन गैप हो, रीजनेबल गैप. And then, of course, the potential GDP impact of 40% localization is a business of rupees 200 billion every year for the local manufacturers. So it's a huge, huge possibility. Now, I'm just coming to the end of the presentation. What is the big opportunity here? Domestic market के लिए करते रहे तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनी ना. So I think we need to position ourselves to capture the big opportunity to leapfrog. सर ये मुल्क अब एक ऐसे सिनेरियो में है जहाँ पे ट्रेडिशनल सेक्टर्स हमें अब उठा के इस क्राइसिस से बाहर नहीं ले जा सकते. We need to support the traditional sectors by some game-changing, leapfrogging technologies, leapfrogging sectors like IT, like mobile phones. Now, what do we need to do? From the association's point of view, we would like to focus on this number. This is China. China's exports are $127.9 billion every year. This is 48.4% of global cell phone exports in the world. Vietnam is number 2. And then you see here, I think the key points to understand China is looking for a second country. They have adopted a China plus one strategy. They're looking for a second country. So, वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं, मगर हम अभी फसाद से फारिग नहीं हैं. तो अभी हमारा झगड़ा चल रहा है, जब खत्म होगा तो फिर वो अंदर दाखिल होना शुरू होंगे. This is a labor intensive industry. And China monthly labor cost is about $700 as compared to Pakistan is about $150 for a skilled worker. Of course, this is a perfect industry for the CPEC phase 2. B2B cooperation ke liye, this is a perfect industry. And I think the target that the government and the industry should set for itself is that we want to relocate 10% of Chinese exports to Pakistan plants. And let's do that very fast. 10% means about 13 billion in annual exports. Let's say if we set ourselves 3 years for this target. Create another industry in parallel. And I want to also say that even in textile sectors, 60% of the value of textiles exported from Pakistan, even more sometimes, is imported content. The cotton is imported, a lot of yarns, zippers, buttons, are all imported. So वो जो एक कहानी है ना कि जी वो local industry और value addition, so we can start with a value addition of 12% and step by step increase it to about 30-35%, and it will be at par with the textile sector or the leather sector, something like that. And then phase 2 should be, once the Chinese have confidence, I think we should be targeting 30% of Chinese exports. Now that means 40 billion in annual exports. This is possible. Vietnam has done it. We can also do it, but we need to work together with trust. We need to trust each other. थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कभी as a government कि यार industry पैसे बना रही है, बनाने दें. As long as we are keeping our money in this country and we reinvesting in this is a perfect formula जिस पे सारे मुल्क जो है वो grow करते हैं. So let's try to emulate the Vietnam success story. To summarize, sir, I want to say that the government trusted us and the mobile industry has responded very positively to this trust. Foreign investment has also arrived from 3 companies at least, Oppo, Vivo and Transsion, and had the economic situation of the country been better, I'm sure that there would have been more foreign investment from companies of the same level, the global companies. Domestic investment has been made despite very difficult economic conditions. So we've stepped up and put our money where our mouth is. Now the industry wants to go to the next level. We want to earn foreign exchange for Pakistan. What we need is political stability. We need policy consistency. And we need a good country image to attract FDI. Minister Saab, the only thing that will save ultimately medium-term, long-term solution for Pakistan is foreign direct investment. India last year had a current account deficit of $100 billion US, but they got $88 billion in foreign direct investment, and that deficit was wiped out. We need a similar story. We need to let people come into the door and participate in Pakistan's economic growth. So to close with a saying, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. So let's try and make jobs in Pakistan, sir. That's our objective. Thank you very much. So ladies and gentlemen, an honorable guest,
ایز وی نو وی آر سٹنگ ان شہر اقتدار، اور شہر اقتدار کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح سے کچھ مصروف ہمیں دکھائی دیں گے ہمارے منسٹر صاحب بھی، انہیں کیبنٹ میٹنگ کے لیے جانا ہے. لہٰذا منسٹر صاحب آپ سے گزارش ہوگی کہ کائنڈلی اسٹیج پر آ جائیے تاکہ کچھ ایسی شخصیات کہ جن کا اس موبائل انڈسٹری میں بہت اہم کردار رہا ہے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ میں سیکٹری ایم او آئی پی جناب امداد اللہ بوسال صاحب کو اس سے بھی گزارش کروں گی کہ کائنڈلی آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیے تاکہ چند شخصیات میں جن کی مرہون منت آج کا یہ ایونٹ ہے، یہ پروگرام ہے اور ہماری موبائل انڈسٹری ہے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے. سو پلیز. چیئرمین پی ایم پی اے عبد الرحمان صاحب کائنڈلی آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب مظفر پراچا صاحب کائنڈلی آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. وائس چیئرمین عامر اللہ والا صاحب کائنڈلی آپ بھی اسٹیج کی طرف تشریف لے آئیے. ڈپٹی وائس چیئرمین جناب ذیشان میاں نور صاحب کائنڈلی آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیے. آپ کی اجازت سے میں پہلے ایوارڈ کی طرف بڑھنا چاہوں گی. مسٹر نعمان خالد ڈائریکٹر ٹائپ اپروولز پی ٹی اے. مسٹر نعمان خالد صاحب. آپ کی بھرپور تالیوں میں مسٹر نعمان خالد ڈائریکٹر ٹائپ اپروولز پی ٹی اے. Thank you so much, Noman Khalid Sahab. Have a good day ahead. Mr. Talib Dogar, Consultant Dubs PTA. Mr. Talib Dogar Sahab. Thank you so much, Talib Dogar Sahab. Mr. Asim Ayaz Sahab, General Manager Policy, EDB. آپ کی بھرپور تالیوں میں مسٹر رضا عباس شاہ صاحب سی ای او ای ڈی بی. ممکن ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ افراد نے صبح کا ناشتہ نہ کیا ہو، لیکن تالیوں میں اتنی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، حوصلہ بڑھایا جانا چاہیے. مسٹر الماس حیدر جناب چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ ای ڈی بی، وہ کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے آج یہاں پر شرکت نہیں کر سکیں گے. ان کے بہاف پہ میں دعوت دوں گی سید نبیل ہاشمی صاحب کو. پلیز کم آن اسٹیج. The award goes to Mr. Almas Haider, and Mr. Sayyid Nabil Hashmi is receiving that award on his behalf. Their next award goes to Mr. Asim Ahmed, Chairman FBR. توصیف گورچانی صاحب ان کے بہاف پر یہ award ریسیو کریں گے. آپ کی بھرپور تالیوں میں. مجھے لگتا ہے ہر award کے بعد مجھے کہنا پڑے گا آپ کی بھرپور تالیوں میں. سیکٹری ایم او آئی پی جناب امداد اللہ بوسال صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ ایک تعریفی صنعت، ایک ایوارڈ منسٹر صاحب جناب مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے.
थैंक यू सो मच एवरीवन. मिनिस्टर साहब, आपसे गुजारिश है कि काइंडली आप स्टेज पर ही रुकिए, ताकि आपने चूंकि अपनी मसरूफियात की वजह से कैबिनेट मीटिंग अटेंड करनी है, तो काइंडली वो लोग जो यहाँ पर आपको सुनने के लिए बैठे हैं और आपकी पॉलिसीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उस पर रोशनी डाल सके, प्लीज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Honorable Secretary Industries Imdadullah Basal Saab, EDB CEO Raza Saab, Honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. To be honest, there's no doubt you're going through a very tough time. The country is going through a very tough time. और जो भी industry है उनको भी सीखना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी सीखना चाहिए, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको सीखना चाहिए. इनिशियली व्हेन आई टुक चार्ज और आप लोगों से मेरी एंगेजमेंट हुई और आई विजिटेड डिफरेंट प्लांट्स, मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा उम्मीद थी और मुझे इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता था और आप लोगों के साथ हमारी बड़ी डिस्कशन भी हुई रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स. लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जो ये हमारा ये ट्रेड डेफिसिट है उसकी वजह से, डिप्लीटिंग डॉलर्स की वजह से जो आप लोगों को एक मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं, तो मुझे उस चीज़ का दुख है और मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ. और मुझे दुख सिर्फ इस वजह से और सिंपैथी आप लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप लोग ब्रांड न्यू एक नई इंडस्ट्री थे जो उभर के सामने आ रहे थे, लेकिन आप लोगों को ये मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं. लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसे सीखें. हम लोगों ने ओवर द इयर्स इंडस्ट्री और मुल्क भी इवॉल्व किया है, लेकिन वो एवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू नहीं रही और हम ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सके एज अ कंट्री भी, और हमारी जो इंडस्ट्री है डिफरेंट सेक्टर्स वो भी उस तरह एफिशिएंट नहीं हो सकी. वो डिपेंडेंट रही हैं गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं रही, वो पॉलिसीज आई हैं फिर चेंज होती रह गई हैं, तो इंडस्ट्री भी इवॉल्व नहीं कर सकी. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उस तरह इवॉल्व नहीं कर सका. तो आज जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, तो हमने इससे सीख के आगे जाना है. मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री में मोबाइल फोन्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमें कंपेरेटिव एडवांटेज है, वी हैव चीप लेबर, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी कम है. अगर हम लेबर प्रोडक्टिविटी देखें तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को अपनी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए. देयर इज नो डाउट. अभी आमिर साहब ने जिस तरह प्रेजेंटेशन दी कि हमारी $150 पर मंथ है और चाइना की $700 है, देयर इज नो डाउट वी हैव अ कंपेरेटिव एज, लेकिन हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी. तो ऑब्वियसली अभी आप लोगों को इतना अरसा नहीं हुआ, लेकिन आगे आप लोगों को इस पर भी फोकस करना है कि हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी ये भी हम बढ़ाएं. और इसमें वॉल्यूम जो है मोबाइल फोन्स का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, 4 करोड़ के करीब वॉल्यूम है. तो इसका मतलब है इससे बहुत ज़्यादा हम लोकलाइजेशन की तरफ आ सकते हैं. छोटे जिस तरह आप बता रहे थे प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, पैकेजिंग है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अब हमें एग्रेसिवली लोकलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा. ये एक नई इंडस्ट्री है, एक नया सेक्टर है, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि आप सब समझदार लोग हैं. आप सब एक जो जब भी मेरी आपसे मुलाकात होती है मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट लोग हैं. तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रखूंगा कि आपको अग्रेसिवली लोकलाइजेशन की तरफ आना चाहिए क्योंकि ये हालात आपके सामने हैं. आपने ये नई इंडस्ट्री है, आप लोग फेस कर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन इस तकलीफ से सीखना पड़ेगा और अपने अग्रेसिवली लोकलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा. और मैं इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल देखता हूँ. एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है. जिस तरह हमें आज पाकिस्तान को इन हालात में भी मुश्किलात का ज़रूर सामना है, लेकिन इन हालात में भी डॉलर जिस तरह रुपी डिप्रिशिएट किया उससे हमारी लेबर कॉस्ट और सस्ती होगी. तो हमें एक कंपेरेटिव एज एक बहुत बड़ा हमारे सामने खड़ा है. तो हमें उसका फ़ायदा उठाते हुए एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करना चाहिए. जहाँ तक मेरी बात है, आप सब जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं इस बात के गवाह होंगे कि मैंने आपके साथ इंगेजमेंट रखी, ईडीबी ने आपके साथ इंगेजमेंट रखी, सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया आपकी स्टेट बैंक के साथ. आपके इश्यूज जो थे जितना हम रिजॉल्व कर सकते थे हमने करने की कोशिश की. तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान इस जो ये फेज से हम गुजर रहे हैं से निकल आएगा. शॉर्ट टर्म में रिलीफ हमें एक मिल जाएगा, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म हमें आगे अपनी लंबी एक सोच रखनी पड़ेगी. लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का काम है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देना, इंडस्ट्रियलिस्ट का काम है, प्राइवेट सेक्टर का काम है अपनी
ایک ٹارگٹ گول بنانا کہ انشاءاللہ 10 سال میں یا 5 سال میں آپ میکسیمم لوکلائزیشن کی طرف آئیں اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہوئے گا. ابھی ہماری میں دیکھتا ہوں انفارچونیٹلی ہماری اتنی فلاڈ پالیسیز رہی ہیں اوور دا ایئرز جہاں ہم نے ایکچولی امپورٹ کو انکریج کیا اور مینوفیکچرنگ کو ڈسکریج کیا. پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں, وہ پگھلتے ہیں, ہماری نہروں میں پانی آ جاتا ہے, لیکن پھر بھی ہم ایگریکلچر کی جو ہمارے ویٹ ٹائپ کموڈٹی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں, اتنا پوٹینشیل ہے, ہمارے پاس پاپولیشن بھی ہے, سائز بھی ہے, ہر چیز ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنا پوٹینشیل میکسیمائز نہیں کر سکے. تو انشاءاللہ یہ ملک ایوالو کرے گا. پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ایک بہت بڑا یہ پرائیویٹ سیکٹر رول پلے کر سکتا ہے, خاص طور پہ موبائل مینوفیکچررز اس دوران کہ جس بحران سے آپ سب گزر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ بہت ہارڈ شپ سے آپ گزر رہے ہیں اور میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں, لیکن ہم نے اس تکلیف سے سیکھنا ہے اور ہم نے لوکلائزیشن اگریسولی لوکلائزیشن کی طرف آنا ہے, اپنی لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. اور میں آپ کے لیے حاضر ہوں, منسٹری آف انڈسٹریز جتنے بھی ہم لوگ ہیں, آپ لوگ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, آپ جو بھی پروپوزل اپنا بنا لیں آگے کے حوالے سے ایکسپورٹ ریلیٹڈ. ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ انگیجمنٹ رکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جس طرح یہ ملک ایوالو کرے گا, اس انڈسٹری میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور میں بہت زیادہ پوٹینشیل دیکھتا ہوں. اور آپ سب کو بھی اب انشاءاللہ اس حالات سے سیکھنا پڑے گا اور لوکلائزیشن کی طرف آنا پڑے گا اور ایکسپورٹ کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا. تھینک یو. میں ابھی آئی ہیو ٹو گو فار مائی کیبنٹ میٹنگ. میں کوشش کروں گا میں واپس آ جاؤں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ مزید ہماری ڈسکشن ہو سکے. یو آر آلویز ویلکم ٹو ان مائی آفس, اور ابھی بھی آ کے ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. Stay کیجیے گا. Here we have a token of appreciation for your presence. So I would like to call Chairman PMPA Abdul Rahman Sahab, Muzaffar Paracha Sahab Senior Vice President, Vice Chairman Amir Alawala Sahab, Deputy Vice Chairman Zishan Mia Noor Sahab. Kindly آپ سب اسٹیج کی طرف تشریف لے جائیے. جتنے بھی ایم ڈی ایم ہولڈرس ہیں سارے تشریف لائیں اسٹیج پر. ایم ڈی ایم ہولڈرز جی سارے مینوفیکچررس سارے ڈائریکٹر جنرل مینیجر پالیسی ای ڈی بی عاصم ایاز صاحب, کائنڈلی آپ بھی اسٹیج کی طرف. سارے ایم ڈی ایم ہولڈرس سارے ہمارے ڈائریکٹرز اسٹیج پہ آ جائیں. ہم سب مل کر آج آل پاکستان موبائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی طرف سے اپنے منسٹر صاحب کو ایوارڈ دیں گے. سارے جلدی اسٹیج پہ آ جائیں. پہلے دے دینا ایوارڈ تو نیچے دے دیں ایوارڈ دیتے فوٹو سیشن میں. مجھے لگا تھا اتحادیوں پر کھڑی ہونے والی حکومت کو صرف ادھر نوازا جاتا ہے, ادھر میں تسی بھی آ جاؤ, تسی بھی آ جاؤ, تسی بھی آ جاؤ. اس نے میرا 2 دن سے دماغ خراب کیا. میں 1.5 لاکھ سے روپیہ کم نہیں لیتی ہوں, اس نے پتہ نہیں کہاں سے کالیں کروا کے تو میرے ترلے شرلے ڈالے. رات تک مجھے اس پہ غصہ چڑھا ہوا تھا. یہ ہے یہ ضلالت کے قابل. تمہاری سوچ ہے. میں نے کہا جی میں ایونٹ بند کر رہا ہوں, تم نے کرنا کر. تھینک یو سو مچ منسٹر صاحب. کائنڈلی میرا مائک آن کیجیے گا پلیز, میرا مائک آن کر دیجیے. تھینک یو سو مچ منسٹر صاحب آپ کے آپ کے وقت کے لیے. اور ایسا نہیں ہے کہ منسٹر صاحب ابھی جا رہے ہیں تو آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں کریں گے. سیکنڈ سیشن انشاءاللہ شروع ہوگا آفٹر دا لنچ, اور اس میں بھی منسٹر صاحب یہاں پر موجود ہوں گے, اور جو کہ ایک ڈسکشن سیشن ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. سو آپ سبھی یہیں پر تشریف رکھیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین مخدوم صاحب. اور اب چونکہ ہماری کچھ اور مزید یہاں پر گفتگو ہونا باقی ہے, بہت ساری چیزیں ایسے ہیں, کچھ ایسے پالیسی میکرز ہیں کہ جو کہ موبائل انڈسٹری میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ان سب کی توجہ جو ہے وہ مجھے درکار ہے. تو 1 بائی 1 میں آپ سب کی طرف بڑھوں گی تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید کنٹینیو کر سکیں, اور وہ ایڈریسز جو کہ ریمیننگ ہے ہم ان کی طرف بڑھ سکیں, ان پر بات چیت ہو سکے. تو ابھی میں آپ سب کو کے ہوتے ہوئے چیئرمین پاکستان موبائل
فونز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی طرف سے عبدالرحمان صاحب سے گزارش کروں گی کہ کائنڈلی آپ اسٹیج کی طرف تشریف لے آئیے تاکہ ابھی تک کی جو ہونے والی پالیسی میکنگ ہے اور یہ جو مینجمنٹ ہے اور اس پر ہونے والے آگے چل کر جو اسٹیپس لیے جائیں گے اس حوالے سے آپ یہاں پر موجود تمام شرکا کو آگاہ کر سکیں. سو پلیز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah, sure. Before I start my speech, I want to say that thanks, just not from my side, from all Pakistan Mobile Manufacturer Association, our senior Vice Chairman Muzaffar Paracha Saab, Vice Chairman Amir Allahwala Saab, Deputy Vice Chairman Zishan Mia Noor, and all senior executive members, Asif Allahwala from Infinix, Oppo and Vivo, our Chinese family brothers, Vigotel, Naveed Ghaba Bhai, Deploy, Asif Khan Saab, United Mobile, Faisal Moti Wala Bhai, Hitachi, Sardar Bhai, Call Me, Fasi Bhai, Me Mobile, Irfan Bhai, Intercom, all family brothers, Hellotech, Ahmed Bhai, Baz Mobile, Itel, Bilal Bhai, Deploy, Naki Bhai, Fawa Mobile, Asim Bhai, Digit, Abdur Rahman Bhai, Intercom, all brothers, Club Faisal Bhai, Mobo Hasnain Bhai, and the Alpha Colonel Imran Saeed Saab. ہماری ساری فیملی آج تھینکس کہتی ہے آل موبائل مینوفیکچر ایسوسی ایشن کی طرف سے ہمارے آنریبل چیف گیسٹ سیکرٹری انڈسٹری صاحب آپ کو، ہمارے پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے نعمان خالد صاحب، طالب ڈوگر صاحب اور آپ کی ساری ٹیم، آپ کو ای ڈی پی کے ہمارے ممبرز نبیل صاحب، سی او رضا عباس صاحب، عاصم ایاز صاحب، جی ایم پالیسی، اور سارے جتنے بھی معزز ہمارے گیسٹ آئے ہوئے، ہم سب آپ کو دل کی گہرائیوں سے تھینکس بھی کہتے ہیں اور وارم ویلکم کہتے ہیں. میں سیکرٹری صاحب آپ کو آج تھوڑی سی آپ پہ نظر دلانا چاہوں گا کہ یہ پودا ہم نے 2015 میں موبائل مینوفیکچررز کا لگایا، جو کہ شکر الحمدللہ آج 2023 میں 31 مینوفیکچررز کی صورت میں ایک ٹریز بن چکا ہے، شکر الحمدللہ. اور جو 2015 سے آج 2023 تک 8 سال کا جو ہم نے یہ پیریڈ گزارا ہے، اس میں جن جن رہنماؤں نے جس ڈپارٹمنٹ نے شکر الحمدللہ ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ رہنمائی کی، آج ہم ان کے لیے بھی تھینکس کہنے جا رہے ہیں. جس میں سب سے زیر فہرست جو ہمارا بڑا ہی پیارا ادارہ ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے، جس میں نعمان خالد صاحب ہمارے ڈائریکٹر ٹائپ اپروول، طالب ڈوگر صاحب اور آپ کی ساری ٹیم نے جو 2013 سے 2018 میں ڈبس کا سسٹم لانچ کیا، جو آپ نے اس کے لیے اسٹرگل کی، جو آپ نے اس کے لیے محنت کی، اور جو آپ نے اس موبائل کو سمگلنگ سے اس ملک سے اس کو آزاد کرایا، ہم آج آپ کو اس فورم پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تالیوں کی گونج میں خراج تحسین پیش کریں گے. یہ تالیاں ان کے لیے کم ہیں، تالیوں کی گونج آنی چاہیے ان کو خراج تحسین دیتے ہوئے، جو اس ملک کے لیے انہوں نے کام کیا. ہم آپ کو، پورا پاکستان اور پوری انڈسٹری آپ کو سیلوٹ کرتی ہے یہ ڈب سسٹم لانچ کرتے ہوئے. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جو ہمارے ساتھ فیملی کھڑی ہوئی، ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے. اس کا نام ہے ای ڈی پی، انجینئر ڈیولپمنٹ بورڈ، جس میں ہمارے چیئرمین الماس حیدر صاحب، ہمارے ممبر نبیل صاحب، ہمارے
सीओ साहब, रजा अब्बास साहब, आप, आसिम अयाज साहब, हमारे जीएम पॉलिसी, जो 2018 से लेकर 2022 तक 5 साल में जो इन्होंने पॉलिसी बनाने के लिए अनथक कोशिश की, जो स्ट्रगल की, दिन रात एक की, हम आज आपको भी इस फोरम के ऊपर खराजे तहसीन पेश करते हैं और तालियों की गूंज में खराजे तहसीन पेश करते हैं। मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बोसाल साहब, आपकी तवज्जो सी पैक के ऊपर दिलाना चाहूंगा। जो सी पैक का तोहफा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान को मिला है, मैं इसे कोई आम तोहफा नहीं कहता, ये एक डायमंड गिफ्ट मिला है पाकिस्तान को और ये एक डायमंड कॉस्ट बनेगा। जितनी भी चाइना की इंडस्ट्री है, उन्होंने अपने फ्रेंड, अपने पाकिस्तान को, फैमिली को उन्होंने ये तोहफा दिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इंडस्ट्री चाइना में लगी हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में लगनी शुरू हो गई है और इंशाल्लाह लगती जाएगी, क्योंकि चाइना को नजर आ रहा है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट का रेट $500 से $700 से एक्सीड कर रहा है और सिर्फ एक उसका दोस्त मुल्क ऐसा ही है जो इसको इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाकर यहीं से हम एक्सपोर्ट का रास्ता हमारा गामजन हो जाएंगे। हम इस मुल्क की तरक्की के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और एम्प्लॉयमेंट जो लास्ट हम 8 साल से इस इंडस्ट्री को दे रहे हैं, जिस तरह आमिर भाई ने, मुजफ्फर भाई ने 40,000 एम्प्लॉयमेंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जनरेट 30 to 40,000 कर चुके हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में हम करने जा रहे हैं। मैं अपने सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब का एक और नजर आज यहां पर इस स्टेज पे फोरम से अपनी ऑल पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से आज हम प्रॉमिस करने जा रहे हैं कि विद इन 2 or 3 years हम आपको एक एक्सपोर्ट का एक बड़ा नंबर देंगे। अल्लाह के हुक्म से $1 बिलियन हम आपको पर ईयर एक नंबर देंगे, जिसमें ये जो मुल्क हमारा किसी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी बहरान में पड़ नहीं सकता। अल्लाह के हुक्म से जो आपने ये पौधा लगा दिया है, ये अल्लाह के हुक्म से दरख्त भी बनेगा और सबको फल भी देगा और मुल्क की तरक्की के अंदर इंशाअल्लाह ताला बड़ा हम साथ दे रहे होंगे। मैं आज इस फोरम के ऊपर जो हमने वादा किया है, मैं अपने ऑल पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सारे डायरेक्टर्स, सारे फैमिली ब्रदर्स को इस फोरम के ऊपर कहना चाहूंगा कि जो हमने आज प्रॉमिस किया है अपने सारे इंडस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री इंडस्ट्री, अपने सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी बिल्कुल यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब, अपने एफबीआर, आईओसीओ जो हमें कोटा देते हैं, उनका सारे इदारों को भी खराजे तहसीन पेश करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें हर जगह पे हमारी 8 सालों के अंदर हर जगह पे रहनुमाई की। और मैं अपने सारे मोबाइल होल्डर्स, जितने भी हम मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, जो हमने प्रॉमिस किया है, हम सब ने फैमिली ने पाकिस्तान की तरक्की के अंदर इसका एक हिस्सा डालना है और इसको जो आज वादा किया है हम सब ने मिलकर निभाना है। बस मैं लास्ट पे यही कहूंगा, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान साहब। और चूंकि मिनिस्टर साहब जा चुके हैं एंड डेफिनेटली वो तकरीब को, इस पूरे इवेंट को, इसकी मॉडरेशन को चेयर कर रहे थे, हेड कर रहे थे, एंड डेफिनेटली उनकी गैर मौजूदगी में अगर कोई काबिल एहतराम हमारे लिए दूसरी शख्सियत है तो वो जनाब इमदादुल्लाह बोसाल साहब आप हैं। और आपकी इजाज़त से ही मैं इस फंक्शन को लेकर आगे बढ़ूंगी और अब मैं गुजारिश करूंगी मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जनाब सैयद नबील हाशमी साहब EDB की तरफ से काइंडली आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Secretary Industries, President, Mobile Manufacturers Association, CEO EDB. I'm sitting in on behalf of Chairman EDB, Mr. Almas. He had to fly over. एक written
स्पीच तो थी बट माशाल्लाह अभी तक जितनी यहाँ प्रेजेंटेशंस हुई और जो यहाँ कहा गया, ख़ास तौर पे आमिर ने जो बात की, प्रेसिडेंट मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आपने बात की, उसके बाद मिनिस्टर साहब ने कुछ जो बातें की वो ऑलमोस्ट वही थी जो तकरीर में लिखी हुई थी. बट सो आईड लाइक टू हाउएवर जो मैंने चीज़ें कुछ पिक की और जो मोबाइल इंडस्ट्री का जो बीज ईडीबी ने लगाया, अब माशाल्लाह वो दरख्त बन गया. और आपका जो आगे जो प्लान आपने प्रेजेंट किया है कि इसको एक एक्सपोर्ट हाउस भी बनाना है और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो हमारी माशाल्लाह इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको लेके आगे भी चलना है, दैट इज़ वेरी हार्टनिंग. इट इज़ वेरी वेरी हार्टनिंग, ख़ास तौर पे आजकल के जो माशी हालात हैं मुल्क के अंदर. लेकिन एक तंजीम को देखना फुल ऑफ इनलाइटनमेंट, इट इज़ वेरी गुड एंड आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट एंड आई होप कि इस स्पिरिट के साथ आप चलें. अच्छा, आपने एक बात की यहाँ देयर आर टू थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू जस्ट पॉइंट आउट, taking cue from what all of you said. Number one was the issue, and I also had pointed this out in the Board of Management meeting with EDB, was the issue of the iOS coming to Pakistan. And at EDB also we strongly feel that we need to encourage bringing in iOS. But the issue remains that why as a country we have not been able to bring iOS in spite of the wonderful policy जो कि Android को दी हमने. तो आपके माशाल्लाह 30-32 लोग कंपनीज यहाँ आ गई, तो वो क्यों नहीं आए? देखें, अंडरस्टैंड करने की ये बहुत ज़रूरत होती है कि पॉलिसीज़ तो हम बना लेते हैं बट पॉलिसीज़ की डेप्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नाउ फॉर iOS issues like intellectual property is very important. Issues like integration and synchronization of the various ministries. For example, iOS को सिर्फ कॉमर्स के साथ इशू नहीं होगा, इंडस्ट्री के साथ इशू नहीं होगा, ईडीबी के साथ इशू नहीं होगा, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ भी इशू होगा because of the devices and the facilities that they have in the iPhones. Android is an open system. So unless when we go ahead with the policy making to get iOS also into Pakistan, we need to go into these areas also and ensure that the policy that we are going to upgrade next जो होगी उसके अंदर इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए. अगर ये सिंक्रोनाइजेशन हम नहीं करेंगे तो ये मसला वहाँ बरकरार रहेगा और वो जो दरख्त की बात हुई और फिर फल आने की जो बात हुई ना, वो थोड़े फल आ तो जाएंगे, कमज़ोर होंगे एक्सपोर्ट के लिए भी और उसके हवाले से. Second thing which I'd like to also point out is the issue which Amir took up regarding CPEC. आपने भी अभी बात की CPEC related issue. CPEC was a wonderful facility जो भी पाकिस्तान के लिए आई. There were two parts in CPEC. One was the G2G, government to government, जो काम होने थे, दूसरे थे B2B. ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के जो काम थे वो तो हमने देखा बहुत से माशाल्लाह हो गए. वी नीड टू अंडरस्टैंड B2B को क्या हुआ. Why weren't we able to bring in larger industries into Pakistan or the small and medium industries into Pakistan? Because when we started off with CPEC, we heard the fabulous number of $40 billion and all that. तो क्या हुआ क्या? What actually happened? Why B2B was not able to land into Pakistan? In my humble opinion, the basic issues were the infrastructure facilities non-availability in Pakistan. और उसके अंदर सर फरिस्त land, ज़मीन. I've also headed the special economic zones development जो पंजाब की है, PIDMIC. So I'm very well aware of the problems जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हमने बना भी ली उनके अंदर क्या है. और आमिर यस सर ऐसे हिलाते जा रहे हैं. जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट हमने बनाया वो इटसेल्फ, मैं pardon me for mentioning this openly in public, but it's a defective law. So fundamentally what happened कि जब हमने SEZ एक्ट बनाया 2014 के अंदर, तो उसको बनाने के अंदर बहुत सी चीज़ें हम भूल गए. तो मेरा अब ये जो फिक्र है
कि मोबाइल पॉलिसी भी अब जो अपग्रेडिंग हमने करनी है, ये आपकी सनत को उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त इनपुट देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को भी बहुत ओपन तरीके से उसको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी सम issues coming in to making this policy where turfs would be there, and those turfs and those firewalls will need to be dismantled to ensure कि जो ये next step जो मोबाइल इंडस्ट्री मांग रही है वो assured किए जाएं और वो एक फास्ट 4th गियर या 6th गियर में वो जा सकें। तो लैंड की जो अवेलेबिलिटी है सेक्रेटरी साहब, ये बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज चाइनीज़ वर एक्सपेक्टिंग free land also. Chinese were expecting tax-free land also, customs-free land also, but that actually didn't happen, even though the law defines it like that. But we have a jungle of parallel rules in other ministries and other departments, which in fact stagger those facilitations to the Chinese. And that's why the B2B just didn't come. Acha, ab bhi late nahi hai. Even now, we can proceed with that, starting off with the SEZ Act ki revision. I am aware kuch ho rahi hai revision, but I do not know if, again, that is a focused revision to actually ensure that domestic investor jo hai, usko bhi facilitation ho, or internationally bhi jin logon ne aana, unko bhi facilitation ho. So my kind advice to you is, and EDB also, and the association also, please have a very, very open mind. I would also request from the government side, at least from the EDB side, जो हमने ये पौधा लगाया था उसके साथ तो हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह और इसको सपोर्ट भी करेंगे, बट दो आपके जो अपनी ये दीवार अपनी एसोसिएशन की है, आपके जो सोच है उसके बाहर भी बहुत से काम अगर आप करेंगे, इसको ज़रा डिटेल के अंदर करके करें, तो फिर आप छठा गेयर लगा के इंशाल्लाह वो 1 बिलियन तो मैं समझता हूँ बहुत कम है जी. आई वुड लाइक कि आप 5 से 10 बिलियन की कुछ बात करें, and then we can all fight with all the departments to go ahead. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your good words. और अब चूंकि मज़ीद हमारे कुछ और सेशंस हैं, तो मैं ज़रा आप सबको ये बताना चाहूँगी कि एक सेशन अभी कुछ ही देर में जब इख्तिताम को पहुँचेगा तो हमारा सेकंड सेशन होगा, तो थोड़ी हाईलाइट उस सेकंड सेशन के हवाले से मैं आपको देना चाहूँगी अगले एक एड्रेस से पहले, कि आगे चलकर इस इवेंट में हमें चंद और शख्सियात जो हैं वो ज्वाइन करने जा रही हैं. मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ चौधरी सालिक हुसैन साहब भी प्रोग्राम में आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगे, और फिर एक बार फिर से मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ जनाब मखदूम मुर्तज़ा साहब जो हैं वो भी हमें प्रोग्राम में आगे चलकर ज्वाइन करेंगे. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सेक्रेटरी MOIP इमदादुल्लाह बोसाल साहब टू प्लीज़ कम ऑन स्टेज. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's been a great pleasure to be part of this summit, and I am grateful to EDB and Pakistan Mobile Manufacturers Association for organizing this summit. Much awaited, and I know, it has been, there was this discussion going on for quite some time to hold this summit. And I think, events like these are really important because they, help you from a government perspective to engage with the industry and also with the other stakeholders to see how a particular policy is going on. What has it been effective? Do we need to further improve it, further upgrade it? So I think this event was due for quite some time, and I think there couldn't have been a more better time or suitable time to hold this event, given the various issues that the industry is facing. I've been in touch with all the office bearers of Mobile Manufacturers Association over a period of time, ever since I took over as Secretary Industries. And I must compliment the association because, they have been so forthright in bringing out issues which the industry faces. And, this is critical because this actually then helps us to, have a response
to help you facilitate or to help you overcome a particular issue that we are facing in particular point in time. I'm really pleased to know that this policy was framed by EDB in consultation with the industry in 2020, and it gives me a delight to actually see the results. But this is just like I would say a distance which is traveled, like half of the distance that we have traveled, and we need to actually go a long way from where we are. And I'm glad, some of the figures that have been projected here, especially by you, Amir Saab, and also by the Chairman Saab, which shows the potential that we can, reap by just tweaking policy and, having some policy by, having some more policy measures in place. You have also given the regional comparison, the international comparison. Why there is this, there was this talk of, government being apprehensive about giving incentives, and then the industry then, not picking up on those incentives or not capitalizing on those incentives to, to give us the results that we need, when it comes to economic growth. If we look at some of the sectors, I'm sorry to say that, those sectors haven't delivered, despite the best of the incentives, despite the best of the protection measures over a period of time. And we have failed in having full import substitution, having full localization, having exports that we critically need as a country, having localization, having productivity, or, having technology upgradation. So, taking an advantage of this opportunity, I would urge the industry and the association to actually work on these areas, because these are the sense of any industry. We need to have exports. We need to have technology upgradation to be competitive with the other players globally. And we need to, which the Minister Industries referred to very pertinently, we need to have the, improved labor productivity. Once you have these strengths, then, we are going to get the results. And, how we are going to do that, I would, request the industry and the association to actually, come up with proposals, very clear proposals on this. And, this policy is not static. This is dynamic. I would see, this policy as a dynamic. And, we can always fine-tune this based on, what we have learned over the last 2 years, what the industry has learned, where it has delivered, where we need to further upgrade this in consultation with also not only with the industry, but other players like FBR, PTA, with the BOI, and all the other relevant ministries. But we need to actually pick up on on the lessons that we have learned over the last 2 years. And there is an equal responsibility actually on all the stakeholders, on the association, on the industry, on the government. But I'm telling you from an experience that this initiative has to come from the industry, and then then the responsibility is on us to actually fine-tune this, to to work out this with you, to develop this further, to see how it is it fits in very nicely with some other sectoral policies, and then to get it going with a complete implementation plan and with an result-based matrix. This is going to give us the confidence that this is what we have kind of agreed with the industry. These are the incentives that we are going to give to the industry, and this is what the industry is going to deliver at the end of the day. During various presentations, there have been international best examples. I would request you to actually to pick up on those examples and see how can we replicate them. Of course, keeping in view the local context. Something which is working in Vietnam or in China or in Bangladesh may not work in Pakistan, because our local conditions are totally different. Our economic milieu is totally different. Our social structure is completely different. So we need to of course, we need to see how it has worked there. What could be the best policy measures?
based on, how it has worked there, and then, we can replicate them. And I'm especially hopeful, given that, this is a labor-intensive industry, so where we have an advantage. So we can actually, some of the merits or some of the positives that have been listed here during this summit, make this sector a very, make this sector a winner sector, It's like picking up winners. So this sector, classifies into that, if you ask me as Secretary Industries. And, so it's only now that, we have to act on this, both the industry as well as the government. And, I would request that, this summit should not be just another summit. We should, as a result of discussions that, that take place here today, and various, proposals which emanate from our discussions today, from different presentations, from different speeches, from the sessions that is still going to continue, we need to actually chalk out a very clear, very clear points, listing, what we need to do, how we need to do, what it is going to generate for, in terms of economic growth, in terms of, expanding the industry, in terms of exports, in terms of labor productivity, in terms of like technology upgradation. And, this is then the timelines that we need to, achieve this over a period of time. And I can assure you, on behalf of Minister Industries, on behalf of my team, that, we will make every endeavor to, take this forward in consultation with you, in consultation with all the other stakeholders, whether it is PTA, it is FBR, it is Ministry of Finance, it is BOI, it is Ministry of Commerce. So, my parting point is that, we now need to actually build on whatever we discussed today and, translate it into something, concrete. At the end of my speech, I would again, I congratulate EDB, I congratulate association, the manufacturers, industry, for organizing this summit, much needed summit, and we need to have actually more of these summits in other sectors as well, to get things going. Thank you very much. सेक्रेटरी साहब, जहां पर आपने इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, वहीं पर आपके हवाले से भी मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगी और सब इसको इंडोर्स भी करेंगे, क्योंकि अमूमन हमने सुना है कि हुकूमती मामलात जो होते हैं वहाँ पर अगर किसी फ़ाइल की अप्रूवल लेनी हो या बहुत सारे मामलात हो, पॉलिसी मेकिंग हो, तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो रखना डालती है, रुकावट डालती है। लेकिन हाथ में बाजू में फ्रैक्चर होने के बावजूद ठंड में, इस मौसम में आप भी कोई बहाना बना सकते थे। आपका यहाँ पर आना हम सबके लिए काबिल तारीफ़ है, तो एक बार फिर से इनकी खिदमत में तालियाँ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, प्लीज हैव योर सीट। और आगे चल के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। अभी मुझे आसिम अयाज साहब ने चंद चीज़ें बताई कि ज़रा आप प्रोग्राम में आगे चलकर जो हमारा सेकंड सेशन होगा उसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के जो मेंबरान हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी कुछ गाइडलाइन आपको पॉलिसी मेकिंग के हवाले से आगे चलकर बयान करेंगे। और फिर पीटीए जिसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं इसलिए भी कहूंगी कि जब भी आपने आईफोन का टैक्स पे करना होता है तो सबकी चीखें निकल रही होती हैं, किसी को कोई कभी याद आए ना आए, पीटीए उस लम्हे आप सबको जरूर याद आती है। बट एनीवेज वो हमारा सेकंड सेशन होगा जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। भी वोट ऑफ थैंक्स के लिए सीईओ ईडीबी आपसे गुजारिश करूंगी जनाब रजा बादशाह साहब काइंडली स्टेज पर तशरीफ ले आइए। Bismillahirrahmanirrahim. Imdadullah Basal Sahab, particularly grateful to you, as Riyab Sahab mentioned, for coming and gracing this event in spite of your medical problem, accident aapka. I think really it's a source of great strength for all of us. Ji, Basal Sahab, Nabil Hashmi Sahab, Abdur Rahman Sahab, Pracha Sahab, Amir Sahab, Zishan Sahab, and I would like to really take everybody's name, but it's not possible. Thank you so much, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. You heard kafi presentations to hogi. I'm just here to thank everyone on behalf of the government. But we heard the journey for this mobile, for providing an institutional framework for mobile manufacturing. We started in 2020 with the approval of policy, and
Abdur Rahman Saab enlightened us. The journey actually started much before with the reserve system. We heard we have around 31 players. We heard from Amir Saab, most international brands are here. We heard from Nabil Saab's views. We need to have another major brand also coming into the country. FDI has come as a result. Employment has been created. We need to do more. As we speak, मैंने तो 93 लिखा था, 95% of mobiles are made within the country. I think in this very short period of time, 2020 में policy आई, it's a remarkable achievement. And I think the achievement is more, as Sheikh Saab said, because of the industry. I mean, we as government, ADB, we are there to try to understand what sort of framework you require. Put that framework in place and then fight for you to ensure that remains consistent. I think Sheikh Saab has been very, very vocal and very strong views. He holds very strong views in this regard, and in all meetings, he's very clear. We need to give you a framework, and we need to ensure it is protected, but it should not be never-ending. It has to be with sunset clauses. I think today's event, as Sheikh Saab said rightly, is to take stock of the achievements. I mean, policies होती हैं, sectors हमारे हैं जो 30-40 साल से चल रहे हैं. And unfortunately, as Sheikh Saab highlighted, what we really expected from them have not come. And for mobile, we want to do it differently. So year and a half, we want to take stock of the situation, and we want to plan for issues. We want to remove the issues in the policy. I mean, they must be obviously, we must think of the future. आगे हमने localization और export के लिए क्या करना है? I would like to thank all these individuals जो मैंने नाम लिए हैं, कई मैंने नाम इसके, and all the institutions जिसके आपने नाम लिए, ADB, PTA, etc., ministry, who have contributed to make this event possible. We are waiting in a very difficult and challenging environment. We all realize, and I heard from many people why. I think, is this the right time? And I think it's the perfect time to meet, because issues and challenges, inaction doesn't get you out of it. We need to state, as Sheikh Saab said, we need to understand what sort of things we need to put in the policy and what actions are required to get out of the situation. Sir, I'm really grateful to Minister Saab, Makhdoom Murtaza Mahmood Saab. I think he's played leadership roles from the day he has come. He has understood the sector. He's understood the industrial sector in general. But the mobile sector is very close to his heart. I think he's very, very kind. He's always been available for the industry, for us, and for this event. In spite of the cabinet meeting, I was talking to him last night, and the cabinet thing came very at the last moment, and 10 baje, 11 baje humne baat ki, and he said, I will come, definitely. And he had to leave, and I think he's promised to come back. And hamare jo Salik Saab hain, Minister for BOI, I think he asked him to come. So I think hopefully we'll have a good session. I'm really grateful to Sheikh Saab, really. Not just, it's not a kind of a Rasmi statement. I think he's been very vocal in supporting the industry, but he's got a very, very clear views on what sort of policies, proper policies for level playing field are required. And he is also clear in the sense of outcomes and outputs. I mean, localization, FDI, exports. I mean, he's very, so we have a direction milti hai. Basically, ab jab direction ho, then obviously it's the department job to ensure. We, Minister Saab, Sheikh Saab, we are there. We take guidance from your vision, and we will all, us, EDB, industry, we will work collectively, inshallah, to meet the expectations that you have from us. I would like to thank other people, Nabil Saab, I think very kindly taking out time, representing the EDB Board of Management. I have colleagues from NUST, from FPR, NPO. We have Shoaib Siddiqui Saab, I think very kind of you to join us. And all ladies, gentlemen, jitne bhi aap aaye hain, I think it's really good and a pleasure to see a full house. It gives us strength. It really focuses us on what the task on the hand is. I would like to thank our EDB Board of Management, Almas Saab, Nabil Saab, who really give us a lot of time to ensure that our policies we try to come up with have a strategic focus. I mean, that's the job of the Board of Management. I think we have an excellent Board of Management. I'm really grateful to the association for helping us plan and organize this event. I think we did it jointly because ADB karti ek sarkari function hota. It's I think very nice to see it's not a sarkari function, although it's genuinely we let the industry drive the organizing. And I'm also grateful to all of you for coming from all these far-off places, Karachi, Lahore.
I think for a businessman, your time is is a value to your time. And you spending time here means this is something very important to all of us. I must appreciate our policy team, Asim and his team, जिन्होंने day-night efforts in these मुख्तलिफ sectors जो हमारे हैं, auto के, a lot of challenging times the auto is facing, a lot of challenging time that the mobile is facing, and really grateful to the team. Very grateful to all the guests who have come in, and I think thank you all very much. We hope to have some very nice productive sessions after this. So with this, I'll beg leave, and inshallah we will be interacting over the course of this seminar, this event. Thank you all very much. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. थैंक यू सो मच जनाब रज़ा बादशाह साहब, और आपने इतनी खूबसूरती से सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया कि मेरे कुछ कहने की गुंजाइश ही आपने नहीं छोड़ी। तो बगैर आप लोगों का वक्त लिए, बगैर ये वक्त समेटे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हमें सबसे ज्वाइन करके यहाँ पर बैठे हैं, कुछ अपनी मीटिंग छोड़ के, कुछ वाकई घर में नाश्ता बना होगा तो डाइनिंग टेबल पर या कॉर्नर टेबल पर अपना खाना पीना छोड़कर आए होंगे। तो क्योंकि हमारा सेकंड सेशन भी है जिसकी तरफ हमने बढ़ना है, और वो सेशन भी इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एनर्जाइज हमें करना पड़ेगा। उस एनर्जी को आप तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो कोशिश ये होगी कि बाहर जो एक डिस्प्ले सेशन रखा गया है आप जाकर उसे एंजॉय कीजिए, और ठीक उसके 5 से 7 मिनट बाद एक टी ब्रेक है वो एंजॉय कीजिए। देन आपसे सबसे मुलाकात होती है 12:20 पर। इसी दौरान, इसी दरमियान स्टे ट्यून्ड प्लीज।